Good evening, students. In this video lecture, I am going to discuss the partial covalent character in an ionic bond. We have studied about ionic bond, covalent bond. Now, in a covalent compound, there is partial ionic character, and in an ionic compound, there is a partial covalent character. So, how we can explain the partial covalent character in an ionic bond? So, that can be explained by fusion with some points, with some rules, and that rule is known as your Fajans rule. Now, what happens during the polarization? During polarization, a cation will polarize an anion. However, an anion will get polarized by a cation. For example, if we consider an ionic compound like your sodium chloride. Now, in this sodium chloride, your sodium ion is your cation, while your chloride ion is your anion. So, this sodium chloride, in this sodium chloride, which is in ionic bond, the bond formed between sodium ion and chloride ion is ionic bond, and therefore the sodium chloride is an ionic compound, as you know. So this sodium ion, which is cation, it will polarize the chloride ion. Polarize means it will distort the electron cloud of this chloride ion. However, the chloride ion will be polarized by the sodium ion. So due to this polarization, what happens? Their electron cloud will come closer to each other. So in this way, we can say that this cation have a polarizing power, while the anion have a polarizability. So first of all, we have to see what is the meaning of polarizing power of a cation. The polarizing power of a cation is defined as the ability of a cation to distort the electron cloud of an anion. Simply we can say that the polarizing power is the ability of a cation to polarize an anion. However, polarizability, it is for an anion. पोलराइजेबिलिटी किसके लिए होगा? तो पोलराइजेबिलिटी आपको होगा एनायन के लिए. सो पोलराइजेबिलिटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन anion. It is the tendency of an anion to become polarized or to get polarized by a cation. Now the question is, on what factors the polarizing power of a cation will depend, and on what factor the polarizability of an anion will depend. So this is explained by a rule, and that is known as your Fajans rule. Now, if we consider the Fajans rule in detail, the rule is your as follows. So the first point is a smaller will be the size of the cation, greater will be
greater will be its polarizing power. Greater will be its polarizing power, and hence higher will be the covalent character. Higher will be the covalent character. So the size of cation for a compound to be covalent, for an ionic bond to be covalent, the size of cation should be smaller. For example, better to consider example in the last. The second point, larger will be the size of the anion. Larger will be the size of anion. Greater will be its polarizability. Greater will be its polarizability, and hence higher will be the covalent character. So this is related with your size of the cation and size of the anion. The next point is greater will be the magnitude of charge. Better to write magnitude of positive charge on a cation, higher will be its polarizing power, and hence higher will be the covalent character. There is one more point, but first of all, better to explain these first 3 points. Now, for example, if we have compounds like lithium chloride, sodium chloride, potassium chloride, rubidium chloride and cesium chloride. They are all chlorides of your alkali metal. You know, lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium, they are your alkali metal. If somebody asks you which is most covalent and which is your least covalent, now just you observe, lithium has 1 plus charge, sodium has again 1 plus charge, potassium has again 1 plus charge, rubidium has again 1 plus charge, and cesium has again 1 plus charge. इसका मतलब इस सभी केटायन में सेम अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, मतलब चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं। अब एनायन को आप देखिए, योर एनायन इज सिंपली क्लोराइड आयन इन ऑल द केसेस। इसका मतलब जब आप क्लोराइड आयन ले रहे हो तो एनायन के साइज में कोई चेंज आपको नहीं होने जा रहा है। अब आप देखिए केटायन क्या आपने किया,
You have taken lithium ion, you have taken sodium ion, you have taken potassium ion, rubidium ion and cesium ion. Now you know the size. What is the order of your size? You know size lithium ion is the smallest. Then we have sodium ion. Then we have potassium ion. Then we have rubidium ion. And then we have cesium ion. आपका लिथियम आयन सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा सोडियम आयन, उससे बड़ा पोटेशियम आयन, उससे बड़ा रुबिडियम आयन और सबसे बड़ा सीजियम आयन. Now smaller will be the size of the gate ion, higher will be the covalent character. It means lithium ion has maximum covalent character. Lithium ion has maximum covalent character, while cesium ion you can say it has your minimum covalent character. तो आप कह सकते हो कि lithium chloride it is your maximum covalent. This is your maximum covalent, while cesium chloride is your minimum covalent. Minimum covalent. So what is the order of the covalent character? It means your order is LiCl, then we have NaCl, then we have KCl, then we have RbCl, and last is your cesium chloride. You can say the covalent character डिक्रीजेस कहने का मतलब ये हो गया कि लिथियम क्लोराइड सबसे ज्यादा कोवेलेंट, उससे कम सोडियम क्लोराइड, उससे कम पोटेशियम क्लोराइड और सबसे कम कोवेलेंट सीजियम क्लोराइड. तो जो सबसे कम कोवेलेंट होगा इसका मतलब वह सबसे ज्यादा आयोनिक होगा, because ionic character and covalent character they are opposing. So you may write ionic character increases in this order. Increases. कोवेलेंट कैरेक्टर अगर डिक्रीज कर रहा है, आप कह रहे हो LiCl is your maximum covalent, it means LiCl is your least ionic. आप कह रहे हो cesium chloride is minimum covalent, it means your cesium chloride is mostly ionic, or you can say it is most ionic. Now let us explain the point number 2. तो पहले तो आपको रिकॉल करना होगा कि आपका पॉइंट नंबर 2 क्या है. तो पॉइंट नंबर 2 जो आपका है that is your larger the anion. Point number 2 is your larger the anion, greater will be the covalent nature, greater will be the covalent character or covalent nature. For example, if we write sodium fluoride, sodium chloride, sodium bromide and sodium iodide. अब देखिए केटायन को, इन सबों में सेम केटायन है, दैट इज योर सोडियम आयन. यहां भी सोडियम आयन, यहां भी सोडियम आयन, सब में सोडियम आयन. मीन्स द चार्ज ऑफ केटायन इज सेम, दैट इज योर +1. Charge of cation, that is your +1. Size of cation is constant. Size of cation you can say same. Why it is same? Because जितने भी cation है वो क्या है आपको सोडियम है. So the main factor is your anion. So the main factor is your anion, that is your size of anion. Now if you consider the size of anion,
if you consider your size of anion, the smallest is your fluoride, then we have chloride, then we have bromide and then we have iodide. ये देखिए आयोडाइड साइज में सबसे बड़ा होता है जबकि फ्लोराइड सबसे छोटा. Larger the anion, greater will be the covalent character. It means your sodium iodide is most covalent due to iodide ion, while sodium fluoride is your least covalent. Your sodium fluoride is least covalent. So let us arrange it. So least covalent is your sodium fluoride, then we have sodium chloride, then we have sodium bromide and then we have sodium iodide. You can write increasing order of covalent character, means covalent character increases in this order. So sodium iodide is most covalent while sodium fluoride is most ionic. Least covalent का मतलब most ionic, most covalent का मतलब least ionic. So you can write ionic character decreases. Ionic character decreasing. क्योंकि ऑब्वियस है कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा. नाउ लेट अस एक्सप्लेन द थर्ड पॉइंट. व्हाट इज योर थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट हमने कहा, थर्ड पॉइंट इज हायर द चार्ज ऑफ, हायर द चार्ज ऑफ cation, greater will be the polarizing power or greater will be the covalent character. For example, we have a compound like sodium chloride. एक compound हमारे पास NaCl, ionic compound है, you know. The another ionic compound is your MgCl2, that is magnesium chloride. Now the question is, which compound is more covalent? सोडियम क्लोराइड में और मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन है जो ज्यादा कोवेलेंट है? द आंसर इज मैग्नीशियम क्लोराइड. कहता है ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में आपका एनायन जो है क्लोराइड आयन है. एनायन इज कांस्टेंट, दैट इज योर क्लोराइड आयन. बट अगर आप केटायन को देखिए, दिस इज सोडियम प्लस एंड दिस इज योर Mg2 प्लस. द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन केस ऑफ मैग्नीशियम इज डबल. यहां पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 प्लस है, जबकि इस केस में पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 प्लस है. So due to higher magnitude of positive charge, magnesium ion have higher covalent character or higher polarizing power than your sodium ion. Therefore, magnesium chloride you can say is more covalent than your sodium chloride. Now, there is one more point. For example, let us consider a compound like CuCl and NaCl. Let us consider a compound like CuCl and NaCl. If somebody asks you which compound is more covalent, so if a compound is more covalent, naturally it will be less ionic, and if a compound is more ionic, it will be less कोवेलेंट. कहता है इसमें क्या करेंगे? अगर आप एनायन को देखते हो, then anion is your chloride ion. In both the case, same anion. Now, if you consider the charge of cation, sodium ion is 1 plus charge, and you can say Cu is also your
1 प्लस चार्ज। भाई Cu पे भी आप देखिए 1 प्लस चार्ज है और आप यहां देखिए सोडियम पे भी 1 प्लस चार्ज है। तो ऐसे को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सो देयर इज वन मोर पॉइंट। द पॉइंट इज द कंपाउंड विथ or the compound having n minus 1d and ns0 configuration is more covalent than the compound with ns2np6 configuration। आप पढ़े हो कि ये जो ns2np6 configuration है, आप पढ़े हो कि ये जो ns2np6 configuration है, इसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोलते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया n-1dn, dn का मतलब ये हो गया कि d में कुछ भी रह सकता है, d4, d5, d6, d10 कुछ भी। इसको हम लोग बोलेंगे सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इट इज नॉट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इट इज योर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड होगा, दैट विल बी मोर कोवेलेंट इन कंपैरिजन टू नोबल गैस वाले से। फॉर एग्जांपल इन सोडियम क्लोराइड वी हैव सोडियम आयन and sodium ion is your 1s2 2s2 2p6। ये देखिए ये ns2np6 हो गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसका? सोडियम आयन का। बट इफ यू राइट इन UCl कॉपर इज योर +1, अगर आप कॉपर +1 लिखोगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और आगे कहिएगा एक एक्चुअली कॉपर बोलता है, आप पढ़े हो योर कॉपर इज 3d10 4s1, योर कॉपर इज 3d10 4s1। बट अगर आपको कॉपर प्लस लिखना हो तो वो 1 इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो 4s से, नाउ इट इज 3d10 4s0। So this 3d10 4s0, that is your n-1 d10 ns0, because n is 4 so n-1 is 3। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज योर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। However, this is your noble gas configuration. So the compound with pseudo-noble gas configuration, pseudo-noble gas configuration generally transition metal में होता है, like copper, है ना, इस तरह का जो भी आप आयरन ये सब में उसको बोलते हैं pseudo-noble। तो ये pseudo-noble gas configuration वाला जो कंपाउंड होगा, that will be your more covalent than the compound with your noble gas configuration. Now let us see one more example. अगर किसी को लगे कि हम सर एक एग्जाम्पल से नहीं समझे हैं तो मैं दूसरा एग्जाम्पल भी बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव कंपाउंड लाइक कैल्शियम क्लोराइड। नाउ कैल्शियम क्लोराइड वी हैव कैल्शियम आयन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए ये हो गया ns2np6, यहां n हो गया आपको 3। दिस इज योर noble gas configuration, this is your noble gas configuration, and another is your HgCl2, another is your HgCl2, HgCl2 में mercury is your 2+, so this mercury ion have pseudo noble gas configuration, this mercury ion have your pseudo noble gas configuration।
क्योंकि इसमें आप कह सकते हो कि इस मरकरी आयन में आपका सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। सो दिस कंपाउंड हैविंग सेम चार्ज, चार्ज देखिए कि टाइम का यहां भी 2 प्लस चार्ज है, कि टाइम का यहां भी चार्ज सेम है, सेम आयनाइन दोनों में क्लोराइड है, बट द आंसर इज HgCl2 is more covalent. Your HgCl2 is more covalent than किससे? Calcium chloride, because this calcium ion have noble gas configuration, while mercury ion, that is Hg2 plus, have your pseudo noble gas configuration. Now I hope you must have understand what is Fajans rule and what is the application of Fajans rule. Thank you.